वचनामृतस्तोत्रम्। नमः श्रीहरिदेवाय भुक्तिमुक्तिप्रदाय च भक्तेच्छापरिपूर्णाय भक्तिधर्माङ्गजन्मने अनेकपुष्पमालाद्यै बहुविधोपहारकैः सुश्वेतवस्त्रधाराय भक्तवृन्दार्चिताय च वचनामृतनामानि यो भक्तः श्रद्धया पठेत् चतुर्वर्गफलावाप्तिः सत्पतेः कृपया भवेत्। अस्य श्रीवचनामृतनामस्तोत्रमन्त्रस्य दासगोपाल ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः धर्मनन्दन श्रीहरिर्देवता भक्तिनन्दन इति बीजम् नैष्ठिकव्रतधर इति शक्तिः परात्पर श्रीहरिकृष्ण इति कीलकम् आत्मपरमात्मबोधसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वाणी मङ्गलदा सुबुद्धिकरणा यस्यास्ति वै श्रीहरेः वाणी मोक्षकरा कुबुद्धिहरणा सत्सङ्गसौख्यप्रदा वाणी ज्ञानविरागभक्तिबलदा धर्मस्य संरक्षिका सोऽयं श्वेतपटाम्बरः सुखकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। अखण्डवृत्तिबोधाय त्रिवैराग्योपदेशिने लीलास्मरणबोधाय ईर्ष्यात्यागविधायिने ध्यानाग्रहप्रकाशाय विवेकवृद्धिकारिणे अन्वयादिप्रकाशाय सेवावृत्तिविधायिने प्रत्यक्षपूर्णकामाय कृतघ्नरूपभासिने एकान्तभक्तरूपाय तत्त्वलक्षणबोधिने सृष्ट्युत्पत्तिनिरूपाय चान्त्यगतिप्रकाशिने ध्यानश्रद्धाप्रकाशाय विवेकी भक्तबोधिने कुसङ्गत्यागबोधाय पञ्चविषयखण्डिने गुणापेक्षाप्रकाशाय ज्ञानीस्वरूपदर्शिने एकान्तधर्मवर्णाय सस्मृतिगानभासिने भगवत्स्थितिदर्शाय ज्ञानस्थितिनिरूपिणे समाधिविघ्नहन्त्रे च रसिकभक्तबोधिने सद्हृदयनिवासाय क्षयवृद्धिप्रकाशिने प्रारब्धादिनिरूपाय सङ्कल्पदंसभासिने निश्चयबोधकर्त्रे च मूर्तिविरामदर्शिने त्रिविधाश्रयबोधाय मायाकर्षणभासिने कल्याणविघ्नवाराय सत्यागिप्रतिपादिने गोत्रासक्तिनिषेधाय निर्वासनविधायिने स्थितिद्वयनिरूपाय मूर्तिस्थितिप्रकाशिने एकोऽहं श्रुतिबोधाय विधिनिषेधदर्शिने चतुर्धा मुक्तिबोधाय भिन्नसङ्कल्पभञ्जिने साकारमतबोधाय नभोरूपनिरूपिणे चतुर्निष्ठानिरूपाय चतुष्कुसङ्गरक्षिणे अन्तर्द्रष्टिनिरूपाय कुशाग्रबुद्धिबोधिने दर्शनिश्चयभासाय साङ्ख्यादिपूर्णबोधिने गुणग्रहणकर्त्रे च मोक्षद्वारनिरूपिणे भजनबाधदर्शाय निर्मानित्वविधायिने मोक्षकारणबोधाय महन्मोदत्वदर्शिने अनन्यस्नेहबोधाय वासनामुक्तिकारिणे बलिवद्भक्तवश्याय सत्यादिगुणबोधिने तत्त्वज्ञानप्रकाशाय शरीरीभाववर्णिने ज्ञानशक्त्यादिबोधाय मूर्तिमत्वविधायिने सत्पुरुषगुणज्ञाय प्रतिमादिनिवासिने सदसद्धर्मशिक्षाय सत्सङ्गवृद्धिबोधिने सधामादिनिवासाय चरित्रगानदर्शिने कामजयनिरूपाय हर्षशोकनिवारिणे
भक्तस्नेहशुभज्ञाय क्रोधेऽर्षादिनिषेधिने धर्मत्यागनिषेधाय श्रेष्ठकालादिसेविने मनोजयनिरूपाय मूर्तिस्नेहविदायिने साक्षात्कारप्रकाशाय ह्यात्मानात्मविवेकिने माहात्म्यफलदर्शाय चतुर्वाणिनिरूपिणे नैमिषार्थप्रकाशाय ईर्षास्वरूपवर्णिने युगधर्मप्रकाशाय बाह्यान्तर्दृष्टिबोधिने पौरुषफलबोधाय ह्यात्मविचारदर्शिने शास्त्रनिश्चयबोधाय मोहप्रमादवारिणे गोपीलक्षणभासाय बदरीशतपस्विने मुक्तभेदनिरूपाय स्वभावदोषवारिणे दिव्येन्द्रियप्रकाशाय शापितबुद्धिवारिणे प्रकृतिक्षणबोधाय जीवज्ञातृत्वदर्शिने सहेतुकावताराय मत्सरहेतुबोधिने आत्यन्तिकनिरूपाय गुणद्वन्द्वनिरूपिणे असाधुलक्ष्मबोधाय चेन्द्रियदमकारिणे प्रीतिलक्षणबोधाय कारणदेहनाशिने क्रूरक्रोधनिरूपाय मृत्युभयनिवारिणे शनिश्चयनिरूपाय सकुतर्कनिषेधिने करणजयबोधाय सङ्गशुद्धिनिरूपिणे प्रत्यक्षरूपज्ञानाय इन्द्रियजयबोधिने धर्मादिहेतुबोधाय निर्विकारिनिरूपिणे सदसत्पुरुषज्ञाय षड्निश्चयप्रकाशिने अपराभवबोधाय स्वरूचिप्रतिपादिने आत्मदर्शनदर्शाय कुवासनाविनाशिने स्तुतिनिन्दानिरूपाय पूर्णनिश्चयदर्शिने बुद्धिमद्रूपबोधाय साङ्ख्ययोगविशोधिने मोक्षबुद्धिनिरूपाय भावदिव्यत्वबोधिने माननिर्माणबोधाय दृढोपासनदर्शिने नटवद्रूपभासाय मोहोत्पत्तिनिरूपिणे विषयवृत्तिवाराय रसिकज्ञानदर्शिने अखण्डचिन्तनज्ञाय पातिव्रत्यनिरूपिणे चित्स्वरूपनिरूपाय कृपादृष्टिप्रवर्षिणे एकादशीव्रतज्ञाय स्वरूपबलबोधिने निश्चयगर्भरक्षाय कर्मभक्तिविधायिने राजनीतिनिरूपाय स्वरूपज्ञानदर्शिने हरितादात्म्यबोधाय स्वभावशत्रुबोधिने स्वरूपधर्मनिष्ठाय तत्त्वशङ्कानिषेधिने कुसङ्गद्वयवर्णाय शुष्कवेदान्तवारिणे ज्ञानशक्त्यादिवर्धाय शुभरहस्यबोधिने शूरभक्तिनिरूपाय ह्यविकारित्ववर्णिने साङ्ख्ययोगनिरूपाय त्यागिगृहिनिरूपिणे भक्तिविघ्ननिवाराय सत्प्रशंसाविधायिने स्वप्रकृतिप्रकाशाय हर्यासक्तिनिरूपिणे स्त्रीसुवर्णनिवाराय ब्रह्मसर्गविधायिने निर्विघ्नभक्तिबोधाय निष्कामदार्ढ्यकारिणे तत्त्वस्वरूपबोधाय कल्याणहेतुदर्शिने मृत्युपायनिरूपाय प्रकृतिनाशदर्शिने वृत्तिप्रवेशबोधाय स्वभावगुणवर्णिने द्रोहनिवारशिक्षाय मानरहितबोधिने अक्षरभेदवर्णाय ब्रह्मप्रीतिविधायिने देव्यासुरीनिरूपाय मायातत्त्वनिवारिणे धर्मपतनबोधाय विषयभोगवारिणे मूर्तिचिन्तनबोधाय कथाद्यतृप्तकारिणे स्वरहस्यप्रकाशाय ह्यात्मसत्तानिरूपिणे त्यागिगृहिनिरूपाय मोहस्वरूपदर्शिने सत्सङ्गाधिक्यबोधाय शुद्धचैतन्यवर्णिने
भगवत्प्रीतिबोधाय भिन्नप्रीतिनिषेधिने स्वसम्प्रदायपोषाय श्रेष्ठकल्याणदर्शिने विक्षेपसन्निवाराय पूर्णसत्सङ्गिबोधिने आत्मनिष्ठादिबोधाय आत्मबलहेतुदर्शिने प्रलयस्थितिबोधाय कुतार्किकनिषेधिने दोषनाशविधात्रे च स्वामिसेवकबोधिने निर्विकल्पकबोधाय शास्त्रादिज्ञानदर्शिने साधुप्रकारबोधाय मूर्तिधारणदर्शिने ईशवद्भक्तसेवाय कर्मफलनिरूपिणे देवासुरविभक्त्रे च योगनिद्रानिरूपिणे निर्गुणसुखबोधाय जीवकल्याणदर्शिने साधुप्रीतिविधात्रे हि पूर्णनिश्चयबोधिने रूपैकानन्तदर्शाय विमुखजीववर्णिने देवासुरनिरूपाय मूर्तिसुखनिरूपिणे जितेन्द्रियनिरूपाय ह्युद्धवरीतिबोधिने भक्तलक्षणबोधाय निर्विकारित्वबोधिने ध्यानविधिप्रकाशाय ब्रह्मभक्तिविधायिने उपशमफलज्ञाय ज्ञानप्रीत्यङ्गदर्शिने प्रत्यक्षप्रीतिबोधाय दयास्नेहनिरूपिणे बाधितवृत्तिदर्शाय निर्विघ्नभक्तिदर्शिने जीवमनःसखिज्ञाय भक्त्यात्मबुद्धिबोधिने सुखोपायनिरूपाय ह्यन्तर्जागृतिदर्शिने प्रलयनाशबोधाय गुणग्रहणबोधिने मानद्रोहादिखण्डाय चैकान्तधर्मरक्षिणे सारासारविवेकाय भक्त्यङ्गप्रतिपादिने पतिप्रीतिप्रकाशाय भरताख्यानबोधिने वासनाजीर्णवर्णाय सत्कुलक्षणखण्डिने स्वभावरूपबोधाय भक्तिधर्मसमानिने कुदृष्टिदोषवाराय मानस्यर्चाविधायिने षोडशसाधनज्ञाय यथार्थभक्तवर्णिने सेव्यसाधुनिरूपाय स्वभावत्यागदर्शिने पतनहेतुबोधाय निर्विघ्नत्यागवर्णिने पञ्चवार्तानिरूपाय मूर्त्येकत्वनिरूपिणे माहात्म्यपापवाराय भक्तिविघ्ननिवारिणे भगवद्वासनाज्ञाय भक्तद्रोहनिषेधिने कल्याणसाधनज्ञाय सुखानुभूतिवर्णिने सुखहेतुनिरूपाय परमात्माप्रवेगिने एतन्नामधरायास्तु श्रीहरये नमो नमः। ऋणदारिद्र्यदुःखानि रोगशोकभयानि च स्तोत्रस्य पाठमात्रेण नश्येयुः किल सर्वशः। कारणदेहनाशः स्यात् स्वरूपनिश्चयस्तथा शास्त्ररहस्यबोधश्च सर्वज्ञानकरो भवेत्। अस्य संसेवनान्नित्यम् हरेरेकान्तिको भवेत्। सर्वारिभयनाशस्तु समस्तसुखदम् भवेत्। सधर्मेकान्तिकी भक्तिः भक्तस्य जायते ध्रुवम्। अक्षरधाम सम्प्राप्तिः स्तोत्रस्य पाठमात्रतः। प्रतिदिनम् दशावृत्या स्तोत्रस्य पाठ आदरात्। त्यागी गृहिजनैः कार्यः सर्वसंसिद्धिदायकः। इति श्रीहरिकृष्णमहाराजकृपया दासानुदासगोपालभक्तप्रणीतम् वचनामृतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।